Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is an English for grade 2, and we are learning unit number 4, and its topic is mobile phone. Yes, my dear fellow teachers, I have divided all these complete unit according to these lectures. So today we are going to get that in which lecture what we have to do and which SLO we will compare. In our lecture number 1, we will get about the use of articles, okay, and its SLO will be identify and recognize the rules for the use of a, an, and the. Recognize that plural naming words do not take the articles a or an. And my dear students and my dear fellow teachers, in lecture number 2, under the title of grammar, we will learn how to apply capitalization on page number 32. And its SLO will be recognize and apply capitalization to the initial letter of the first word of a sentence and to the initial letter of people, pets, and places. So in lecture number 3, we will learn about the use of has and have on page number 33. So my dear teachers and my dear students, and its SLO will be use has and have to show possession. So in lecture number 4, what we have to learn, my dear students? Yes, in lecture number 4, we will learn about position words, and its page number will be on 34. And its SLO will be recognize, identify, and use a few words showing positions, e.g. to or from, up, down, here and there. Preposition of location, a few words showing position, e.g. in, on, to, with. In our lecture number 5, we will learn about the language focus irregular sight words on page number 31. And its SLO will be identify and pronounce common familiar 2 or 3 syllable words and common irregular sight words. So my dear students and my dear fellow teachers, in lecture number 6, we will learn about read and understand the text. On page number 29 and 30, we will learn about reading and understanding. And its SLO will be use pre-reading strategies to predict the story by looking at pictures in the text. Identify and classify words that begin with consonant or vowel sounds. So my dear students and my dear fellow teachers, in lecture number 7, we will learn about reading skills on page number 36, on grammar, page number 32. And its SLO will be follow the sequence and a simple procedure of picture map, spell simple 2-3 syllable words, and take dictation of familiar words learned in class. And in this lecture, my dear students and my dear fellow teachers, we will cover up our 3 SLOs. In lecture number 8, we will learn about create color, shapes, and patterns on page number 35 and 36. So my dear students, its SLO will be color within lines and create simple patterns, recognize and classify colors and shapes. So in lecture number 9, what we have to do, we will learn about oral communication skills on page number 37. And this will be our last lecture of this unit. And its SLO will be articulate, recognize, demonstrate, and use some formulaic expressions to offer and respond to basic routine greetings. So my dear students, in this way, we will cover up this complete unit according to these SLOs. Okay, so now what you have to do, you have to open your book, page number 29, open it. So we are going to start our first unit number 4, mobile phone. First lecture is there, so we are going to start. Okay, have opened, good job. मोबाइल फ़ोन, तो आज हम बेटा किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम मोबाइल फ़ोन के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो ये डिवाइसेस आम हैं, आप लोगों के घर भी होगा, तो हर इन बंदे ने लिया हुआ है। तो आज हम मोबाइल फ़ोन के बारे में इसके बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे कि ये किसने ईजाद किया और कब ईजाद किया। ठीक है, कम ऑन नेक्स्ट पेज. Okay, open page number 30. Have opened. Good. So we are going to start our first line.
Yes. So you have to read with me, okay? The first mobile phone was invented in 1973 by Dr. Martin Cooper. Okay? तो किसने इजाद किया? सबसे पहला मोबाइल फोन वाज इन्वेंटेड, इजाद हुआ 1973 में। तो इसके इन्वेंटर का क्या नाम है? डॉक्टर मार्टिन कूपर। ओके, तो टेलीफोन किसने इजाद किया बेटा? यस, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने इजाद किया। और कब इजाद हुआ? 1973 में। आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों बाद, एवरीवन हैड अ मोबाइल फोन, हर एक के पास एक मोबाइल फोन था। ओके, जब स्टार्ट में इजाद हुआ बेटा तो उस वक्त बहुत थोड़े लोग यूज करते थे, कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों ने लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जैसे भी नॉलेज बढ़ता गया तो कुछ अर्सा बाद हर इंसान के पास मोबाइल फोन था। आज तो हर इंसान के पास है, ऐसा है ना? ओके, मोबाइल फोन मेक्स अस कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। अब उसका एक फायदा बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन क्या करता है कि इंसान को ना दूसरी दुनिया से सेकंड्स में कनेक्ट कर देता है। ऐसा है ना कि अगर आप कहीं भी बैठे हैं, सपोज आपको कोई भी इमरजेंसी हो गई है, कोई ऐसा हुआ है, तो आप फौरन कॉल की आपने और आपने अपना मैसेज दे दिया, किसी को बुलाना हुआ, कहीं आपने जाना है, कोई भी इमरजेंसी, किसी भी सूरत हाल में अगर कोई सिचुएशन हम फेस करते हैं तो हम फौरन कॉल करके अपना मैसेज छोड़ देते हैं। ऐसा है ना, इट मीन्स सेकंड्स में हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं एंड इट इज ड्यू टू मोबाइल फोन। और बेटा मोबाइल फोन एक ऐसी इजाद है कि हम जहां जाएं इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो इसका एक ये फायदा भी है, आप कहीं भी हो, किसी भी मसले में हो तो आप फौरन कॉल करो। ओके, और एक और मैसेज भी मैं आपको दूं कि आपको अपने घर वालों के, अपने एल्डर्स के, अपने टीचर का स्पेशली, और अपने फादर मदर, अपने घर का आपको कॉन्टेक्ट नंबर याद होना चाहिए। ओके, ये आपने मस्ट करना है। ओके माय डियर टीचर्स, यू हैव टू फॉलो दैम। It is a calculator, gaming device, net browser, etc. तो इस पे और क्या क्या किया जा सकता है? इस पे कैलकुलेटर भी होता है अगर आपने कैलकुलेटर यूज करना हो। इस पे और क्या होता है जी? इस पे गेम्स भी होती हैं और इसमें नेट ब्राउजर भी होता है। नेट पे कुछ भी चीज आपने सर्च करनी हो, आपने क्लिक किया और आपको वो चीज मिल गई। तो इसमें बहुत से फायदे हैं सेलफोन के जो यहाँ बताए जा रहे हैं। मोबाइल इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। मोबाइल फोन एक अहम इजाद है। इट हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करता है। इट हैज मेड आवर लाइफ इजी। इसने हमारी जिंदगी क्या कर दी है? आसान बना दी है। वी कैन डू आवर डेली लाइफ बिजनेस थ्रू मोबाइल फोन। हम रोजाना के अपने मामूलात, रोजाना के काम मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं। इट हैज आल्सो मेड कम्युनिकेशन इजी। इसने और क्या काम किया? इसने हमारी बातचीत जो है ना बहुत आसान कर दी है। कुछ बातें बेटा ऐसी भी होती है जो हम फेस टू फेस नहीं कर सकते, तो हम कॉल करके कह देते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारी बातचीत के जो मराहिल हैं वो भी इसकी इजाद से इजी हो गए हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने मोबाइल फोन के फायदे पढ़े हैं कि मोबाइल फोन किसने इजाद किया, कब इजाद हुआ, 1973 में हुआ। इसका कौन था इजाद करने वाला, कौन था जिसने किया? इसका इन्वेंटर था डॉक्टर मार्टिन कूपर। ओके, हैव यू गॉट दैट कि मोबाइल फोन के क्या क्या फायदे हैं? ओके, गुड जॉब। सो इट मीन्स यू हैव गॉट टुडे। वाओ, गुड जॉब। सो वी हैव डन विद इट। सो आई होप you have enjoyed that we have learned today about our mobile phone, okay, and its facts. Good job. So tomorrow we will start our lecture number 1 of this unit, inshallah. So be ready, stay blessed. Till that time, see you soon, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.